Hey guys, what's up and welcome to part 2 of Hogwarts Legacy। लास्ट एपिसोड में गेम स्टार्ट करने के बाद अगर स्टोरी के बारे में ऊपर ऊपर से बात करें तो अपना कैरेक्टर एक 5th ईयर स्टूडेंट है, तो ये पहले कभी हॉगवर्ट्स गया नहीं है। उसके अलावा इसके पास कुछ तो एबिलिटीज़ है जिससे इसे एंशियंट मैजिक दिखाई देती है। अब मुझे लग रहा है जो एंशियंट मैजिक है ये तुम्हारे गेम के स्टोरी का एक मेन हिस्सा होने वाला है। उसके अलावा एक रैगनॉक करके एक गॉब्लिन को दिखाया जो फिलहाल अभी ऐसा लग रहा है कि गेम का विलन वो है। उसके अलावा प्रोफेसर फिक को दिखाया जो अपना काइंड ऑफ तुम बोल सकते हो कि गेम का हैग्रिड है, जो अपन को अपने नॉर्मल दुनिया से हॉगवर्ट्स तक लेके आया था वो बंदा। उसके अलावा एक दो और टीचर्स को दिखाया, प्रोफेसर ब्लैक जो कि हेडमास्टर है, एंड सबसे मेन अपना हाउस सेरेमनी लास्ट एपिसोड के एंड में हो गया था एंड वी वर प्लेस्ड इन रेवन क्लॉ, जो चील घात जिसको हिंदी में बोलते हैं। मैंने जो भी डिफॉल्ट मिला था वही चूज कर लिया, मैंने वो बदलने की कोशिश नहीं की, बट आपके पास ऑप्शन होता है, आप चेंज कर सकते हो कि अगर आपको कोई दूसरा हाउस, काफ़ी लोगों को मतलब प्रेफर होता है कि या तो ग्रिफिंडोर गरुडद्वार या स्लिदरिन नाग शक्ति में जाना था, तो तुम चेंज कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बाकी इट्स टाइम टू एक्सप्लोर द प्रॉबेबली हॉगवर्ट्स। अपन पहले एक्सप्लोर करेंगे, अपना ये हाउस पहले एक्सप्लोर करेंगे एंड देन वी विल गो आउटसाइड। एक सेकेंड, रूम मैंने खुद देखा नहीं था ठीक से। सो दिस इज गोना बी योर रूम। एक दो स्पेल्स मिले थे पिछले एपिसोड में, एक अपन को लाइट जलाने वाली स्पेल मिली, लूमिनस या ऐसा कुछ करके। एक स्पेल अपन को मिला था रिवेलियो, जो मतलब हिडन चीज़ों को रिवील करता है। उसके अलावा एक और स्पेल कोई मिला था, याद नहीं आ रहा है मुझे। अरे ब्लॉक्ड क्यों है, इन्होंने ब्लॉक्ड कर रखा है रास्ता। Must be different starting Hogwarts in your 5th year. That's not right either. ओह, यू कैन ईट फ्रूट्स। ये अपना कॉमन रूम है, डेफिनेटली मैं बोलूँगा सबसे ब्राइट कॉमन रूम है अपने रेवन क्लॉ का। मैंने बाकी इसके भी कॉमन रूम्स देखे थे ट्रेलर में जो शोकेस किया था। अपने गरुड़द्वार का कॉमन रूम तुम्हें सबसे क्लासिक लगेगा, स्लिदरिन का कॉमन रूम थोड़ा सा ग्लूमी और डार्क टाइप का लगेगा, एंड अपने हफलपफ का कॉमन रूम तुम्हें थोड़ा सा क्या बोले उससे थोड़ा नेचुरल लगेगा, उसमें प्लांट्स वगैरह लगे होते हैं। और जो रेवन क्लॉ का कॉमन रूम तो तुम देख ही रहे हो, थोड़ा काइंड ऑफ मैं बोलूँगा इनका कॉमन रूम सबसे पॉश है, थोड़ा लग्जरियस टाइप का लगता है। जो उससे बात करनी है अपन को। I'm not sure this is the right spot. 2-3 कैरेक्टर से बात कर सकते हैं अपन। इंट्रोड्यूस योरसेल्फ टू अमित, भाई इंडियन बंदा है क्या, समांथा एंड एवरेट। I want him to be in the perfect place, a place he'll be happy with, but I can't seem to find it. Great golden gobstones! I want him to thrive here. Golden gobstones? My own little expression. I bought this Dittany seedling from home and I so want him to feel cozy. Dittany is amazing, isn't it? So much healing power in such a little plant. I've a bit of a thing for plants, as you can see. Pleased to meet you. I'm Samantha. Nice to meet you, Samantha. Is Dittany used in Wiggenweld potion? It is. Looks like someone's been studying up on their potion making. Actually, Professor Fig told me about the Wiggenweld potion. Of course. I heard you were studying with him before term. He's an enigma, Fig. Teaches about theory, yet seems to know a lot about practical magic. आई थिंक ये नेविल लॉन्ग बॉटम है अपनी स्टोरी की। नेविल लॉन्ग बॉटम जो हैरी पॉटर मूवीज़ में ये पोशंस वगैरह बनाता था, प्लांट्स जिसको पसंद है। He's quite knowledgeable. I wouldn't really know. Professor Fig does know a great deal about different forms of magic. Well, I hope he told you about more than Wiggenweld. You've lots to catch up on, I'm sure. Isn't it Hufflepuff who likes plant? Do most students grow their own ingredients? Is it common practice for students to grow their own ingredients? Oh, yes. In fact, our herbology teacher, Professor Garlick, encourages it. And I don't think Professor Sharp, our potions master, cares where you get your ingredients as long as your brews are all perfect. तो आई गेस अपन अपने खुद के पोशंस बना सकते हैं, वो इंग्रेडिएंट्स वगैरह मिलने के बाद। पहले क्लास अटेंड करना पड़ेगा। An affinity for herbology is more typical of a Hufflepuff than a Ravenclaw, isn't it? Ordinarily, perhaps, but it runs in my family. We've a full plot of these little fellows back home. I suppose you could say herbology is in my roots. It was nice to meet you, Samantha. Good luck with your Dittany. Thank you.
And good luck to you too on your first day. आई थिंक ये कैरेक्टर्स के बाद में साइड मिशन मिलेंगे, इसलिए अपन इंट्रो कर रहे हैं इनसे। वैसे अगर तुम अलग हाउस में लोगे तो मुझे लग रहा है तुम 3 अलग कैरेक्टर मिलेंगे, अलग डायलॉग्स रहेंगे तुम्हारे। You'd think you could... That is not how that... Why, hello. Would you like to take a look? भाई ये तो इंडियन ही है, नाम तो पूरा इंडियन है इसका। Can't see too much in the day. Well, except for stars like Sirius, Canopus, Vega, and Arcturus. I'm Amit. Pleasure to have you in Ravenclaw. Never met someone who's been so close to a dragon before. Can't say I'd recommend it, frankly. It's nice to meet you, Amit. I take it you like astronomy? Oh, yes. So much to be learned from the stars. Also, there's something about the open air and night sky above the tower. It's invigorating. You will adore astronomy. Professor Shaw is incredibly knowledgeable. I hope astronomy's on my schedule. Sounds interesting. I have good news for you. You are most definitely taking astronomy. It is required for all 5th years. You will be enthralled with the tower. Plus, a quality telescope can show you things you never dreamed of. I suppose I'll see you in class then. Yes. Oh, and speaking of class, better get to my first one of the year. Nothing like the smell of fresh parchment, is there? Be seeing you. Okay, there we go. एक और कैरेक्टर बचा है। Just have to wait for the right moment. One moment. Watch this. ये प्रैंकस्टर है। Someone threw a dung bomb. Let's get out of here. That wasn't quite the reaction I wanted. Oh well. Right. What did you hope would happen? I suppose I hoped it would lighten the mood. Ravenclaws can be a bit on edge the first day of class. I'm Everett, by the way. You seem downright calm next to some of these characters. And you survived a rather harrowing trip here. I'm looking forward to my first day. I'm actually a tad nervous. I'm glad to be here. Ready for classes to start. Good. Glad to hear it. Truly, there's no reason to be nervous. Most professors are firm but fair. I mean, not all of the tricks I play are as simple as a tossed dung bomb, and I'm still here. Wait, did you say most professors are fun but fair? Ha! I did. But probably best I let you judge for yourself. I do tend to push their limits. I should wander off before someone traces that dung bomb back to me. Nice meeting you. You too, Everett. So we got a trickster, herbalist, Professor Weasley is looking for you just outside. and You'd best astronomer. not keep her waiting. I'll be with you. खुलने वाला है मुझे लग रहा है। नहीं, I thought अच्छा नीचे जाना है लॉल। मुझे लगा था वो ओपन कुछ होगा, वो स्टैचू। Oh, Professor Weasley. Good morning. I trust you're ready for your first day at Hogwarts? I've been dreaming of this day for a long time. Can't believe I'm here. Well, you are here. Make the most of it. You only have one first day at Hogwarts. Now, in light of your unique situation, joining us as a 5th year, you'll need to catch up with your classmates and not fall behind. Especially as you'll be expected to complete your OWLs at the end of the year. OWLs? Owls? Yes, your ordinary wizarding level exams. They will determine what type of career you can have when you leave here. After much discussion with the headmaster and the Department of Magical Education at the Ministry, we've devised something extraordinary to ensure your success. Here you are. What is it? It is a wizard's field guide. It will help you to keep track of what you are learning so that you master all that's expected of a 5th year. You would be wise to take full advantage of this exceptionally valuable resource. Basically अपना inventory है मुझे लग रहा है वो, जहाँ पे अपना skill tree वगैरह सब होगा Thank शायद। you, Professor, but what do you mean it will keep track of what I'm learning? Perhaps seeing it in action will answer any questions you may have. Walk with me and we shall put it to the test.
बेसिकली ट्यूटोरियल ही चल रहा है अभी भी. This way. The guide will give you opportunities to practice your magic and educate yourself about wizarding lore. रेवेनक्लॉ टावर स्कूल के ऊपर के हिस्से की तरफ है. I certainly would have appreciated something like the field guide when I was a student. स्लिदरिन बेसमेंट की तरफ है कहीं पे. एंड आई गेस बाकी दोनों इनके बीच में होंगे. Why don't you cast Revelio on this bust and see what details the field guide can provide? Revelio. ओह नाइस. क्या मिला अपन को? This burst created in honor of Ravenclaw House resides in the lofty Ravenclaw Tower. अच्छा ये तो बेसिक चीज़ बताई उसके बारे में. और क्या? You have just unlocked Field Guide Challenge. Your progress towards completing challenges appears here. अच्छा. Collect Field Guide pages in Hogwarts. अच्छा 2 अपन को Hogwarts में, 1 अपन को मिला, 1 और चाहिए. Field Guide challenges are the only way to acquire experience point or XP. अच्छा वही मतलब हर जगह अभी रिवेलियो करते रहना पड़ेगा. दिस इज योर विजर्डिंग लेवल. एक्सपी अर्नड व्हेन द चैलेंजेस इंक्रीजेस योर लेवल एंड पावर. ठीक है. योर फील्ड गाइड ट्रैक्स योर करंट चैलेंज प्रोग्रेस. सेलेक्ट द चैलेंजेस मेनू टू कंटिन्यू. ओके 2 चीज़ दिखा रहा है. ये लेवल है, ये अपना चैलेंज प्रोग्रेस है. बाकी और भी चीज़ें बहुत सारी. कलेक्शन, गियर, इन्वेंट्री, क्वेस्ट, मैप, अरे बहुत सारी चीज़ें. अच्छा फील्ड गाइड ये रहा. तो टोटल 5 चीज़ें. एक्सप्लोरेशन, क्वेस्ट, फील्ड गाइड, रूम ऑफ रिक्वायरमेंट. अच्छा ये एक बढ़िया चीज़ थी. आई गेस यहाँ पे अपन अपने पोशंस वगैरह बना सकते हैं, पेट्स पाल सकते हैं. एंड कॉम्बैट. कलेक्टिंग योर फर्स्ट गाइड पेज अनलॉक द न्यू चैलेंज कैटेगरी. न्यू चैलेंजेस यू अनलॉक थ्रू आउट योर एडवेंचर विल अपीयर हियर. ओके सेलेक्ट फील्ड गाइड टू कंटिन्यू. ये क्या है भाई? Each challenges have tiers. Special rewards unlock at each tier you complete. From appearances to critical upgrades. अच्छा आई थिंक क्या गियर खुला है? चश्मा खुला है शायद. द रिवॉर्ड मस्ट बी क्लेम्ड फ्रॉम द चैलेंजेस मेनू. कम बैक ऑफन टू कलेक्ट द रिवॉर्ड्स. अच्छा ठीक है ठीक है भाई. इस हिसाब से तो बहुत सारी चीज़ें हो गई करने के लिए तुम्हारे पास गेम में. अगर तुम Clever, isn't it? काइंड ऑफ एक Keep your eyes 100% open for more completionist हो opportunities like तो that, बहुत सारी चीज़ें. inside and outside of the castle. No time to waste. You've classes to attend. Revelio. ये क्या है? ओह आई थिंक पजल है कुछ. यहाँ पे भी कुछ था ना. फिलहाल तो आइडिया नहीं है, बाद में देखते हैं. Good timing. Perfect opportunity to show you how to use blue flames to get around a bit quicker. Your field guide contains a map of the castle. Open it up and find Central Hall. Fast travel basically. You can open the and fast travel. Yep, वही है. Oh, there we go. Nice map. थोड़ा सा 3D मैप टाइप का बनाने की कोशिश किया. Hogwarts is divided into 2 main areas. The left side of the map is where students and the professors live. Okay. And includes the houses, common rooms and the great hall. ठीक है. तो राइट साइड में भी क्लासेस होंगे. ये अपन अभी लेफ्ट साइड है. अच्छा. Select the grand stairs region to continue. अपन यहीं पे तो है. Okay. In the view, you can see the flue flames available in that region. अबे भाई लेफ्ट साइड में इतने सारे रीजन है. अब उस पर क्लिक करूंगा तो फ्लू फ्लेम्स दिखते हैं. ग्रे फ्लू रिवील द लोकेशन ऑफ अनडिस्कवर्ड फ्लेम. ठीक है ओके कूल. द राइट साइड ऑफ द मैप वेयर एकेडमिकल पॉइंट्स ऑफ इंटरेस्ट इंक्लूडिंग एस्ट्रोनॉमी टावर, लाइब्रेरी, ग्रीन हाउस. हाँ वही लाइब्रेरी एनेक्स.
प्रोफेसर वीजली हैज अनलॉक द सेंट्रल हॉल फ्लू फ्लेम्स फॉर यू. अच्छा एक उन्होंने खोल दिया है. यूज A&D. अच्छा ओके. And here we are. Quite the time saver. These stairs lead directly to Central Hall. You can get almost anywhere in the castle quickly from Central Hall. Always something happening here. It's the heart of the hive. Our King's Cross station, so to speak. स्टैचू किसका? यूनिकॉर्न और वेयरवुल्फ है That क्या? should be all for now. You'll be expected to attend both Charms and Defense Against the Dark Arts classes today. And I'd like to be sure you get to Hogsmeade as soon as possible to replace the supplies you lost on the way here. अच्छा, Hogsmeade, I guess shop होगा. Can you tell me more about charm classes? What exactly is Defense Against Dark Arts? Hogsmeade. You mentioned Hogsmeade, Professor. Hogsmeade is the only all-wizarding village in Britain and is home to an array of shops and pubs. You should be able to find all of the school supplies you require in Hogsmeade. You will also, I imagine, enjoy many a butterbeer there with friends in due course. अच्छा, पूरा एक विलेज ही है तो मल्टीपल शॉप्स रहेंगे. Thank you, Professor Weasley. A lot to absorb on your first day, and you have much to learn. Happily, your professors have agreed to create additional assignments for you outside of class. You'll be up to speed in no time. Judging by your adept use of Revelio earlier, I'd say Professor Fig succeeded in at least showing you the basics. He did, Professor. He's been terribly vague as to the events preceding your arrival, specifically about what happened after that awful dragon attack. My suspicion is that there's more to the story than a search for belongings and an extended trip up to the castle. So अपन या तो बता सकते हैं नहीं तो नहीं बता सकते. प्रोफेसर फिग ने अपन को बोला था फिलहाल किसी को ना बताने के लिए, तो आई गेस अपन नहीं बताएंगे. आई गेस ये चीज़ें मे भी आगे स्टोरी में मतलब अफेक्ट करती होंगी. I'm sorry, Professor, but I'm afraid that's all there is to it. Almost precisely what Professor Fig said. Speak of the devil, Professor Fig. Your ears must have been burning. Oh? Yes. You seem to have provided our new fifth year with a solid foundation in the basics of spellcasting. Ah, I'm afraid I can't take all the credit there, Professor. They've a rare aptitude for magic, it seems. Well, I'm just glad you both arrived in one piece. Perfectly good boats and carriages to Hogwarts, and you chose to fly in the path of a dragon. I wouldn't say I chose the dragon's path, Professor. Rather unfortunately, it would seem that it chose us. Very well. Enough chit-chat. I need to get to class myself. Might I rely on you, Professor Fig, to explain the details of the field guide's map? Of course. Thank you. ये लोगों पूरा Good luck today. And remember to use your field guide. It will be invaluable to you. And invaluable to me, as I'll be using it to keep up to date on your progress. Yes, Professor. Come and find me in my classroom after you've attended both classes today, and I'll explain more about those assignments I mentioned. And we'll see if we can't get you to Hogsmeade for those supplies. या मैं ये बोल रहा था ये लोग अगर ये डालते हैं ना ट्रेन गेम में बहुत सही रहता है, जो मतलब एक्चुअल ट्रेन में अपन बैठ के हॉगवर्ट्स में आते हैं, जैसे हैरी पॉटर के फर्स्ट और सेकंड मूवी में था. फर्स्ट मूवी में था, सेकंड में तो वो लोग कार में बैठ के आते हैं ना शायद. ओके, ये ट्रोल्स है, मरमेड्स है, यूनिकॉर्न है, एंड आई गेस वो लाइकन या वेयरवुल्फ है ऊपर. ये सारे चीज़ें अपन मूवी में देख चुके हैं. It's good to see you, Professor. And you. I was hoping our paths would cross today before you immersed yourself in studies. Did I hear you masterfully evade Professor Weasley's interrogation regarding our late arrival? I did my best, but I'm fairly certain she suspects that we're not being entirely forthcoming. Yes, well, Professor Weasley is a brilliant and astute witch. It was right to keep the details to yourself for now.
We don't know where this path we've embarked upon will lead. It may require a bit more flexibility with your time than she would approve of. And she may feel obliged to share details with the headmaster that would be better left between us. Understood, Professor. Good. Now, as capable as you are, I believe the ability you possess obliges you to be well trained. Happily, you have the benefit of an exceptionally skilled team of witches and wizards to guide you. Speaking of guides, and so that I may avoid another not-so-subtle reproof from Professor Weasley, why don't I show you the clever enchantment we included in the field guide's map? Unfold it and have a look. Represents the main quest. Okay. Completing the main quest will further the story, unlock new features, and grant XP. Okay. Some quests are locked by spells and or level requirement. In these cases, you will need to be of required level or have required spell. Okay, new spells can be earned by completing professor assignment or as quest reward. अच्छा, तो फिर professor assignments important हो गए. अच्छा, कौन सा ट्रैक करें अपन? चार्म्स क्लास और डार्क आर्ट सुनने में सही लग रहा है. लेवियोसो मिलेगा अपन को इसमें एक्यो. पहले आप दोनों पे जाना तो दोनों पे ही है. पहले इस पे चलते हैं. The map is enchanted to help you find your way. This will be incredibly helpful. Thank you. Now, sounds like you've quite a day ahead, what with classes and a trip to Hogsmeade for supplies, including your own wand. You'll enjoy Mr. Ollivander. He's an exceptional craftsman and a good friend. I shall reach out when I have more information about our mysterious locket. For now, focus on your classes and pay attention. More than your owls may hinge on the magic you are able to master within these walls. अच्छा, अपन को लॉकेट मिला था ना पिछले एपिसोड में लॉकर रूम के अंदर. वो बंदे का नाम भूल गए जिसके अपन ने मेमोरीज देखी थी, बट उसको भी क्या कहते हैं, ये एंशिएंट मैजिक दिखता था अपने तरफ. ओ ये क्या है? उसका क्या करूँ जो उड़ रहा है पेज? The charmed compass will lead you to anything you have been tracking. Okay. एक सेकेंड, वहाँ पे कुछ है. Off on another adventure, are we? ये किसकी आवाज़ थी? ओह. ये फोटोज, ये हॉगवर्ट्स में यूजुअली ये फोटोज वगैरह बात करते हैं ना तुमसे, तो वही वो मूर्ति की आवाज़ थी. ओके, दिस इज अनदर पजल डोर. सेम जैसे वहां पे था. Revelio. $21, यहाँ पे 11 है. ये डायग्राम्स को अगर अपन नंबर दे तो कितने? ये 1 2 3 4 5 6 7 8 टोटल 9 है. तो 9 डिजिट्स के हिसाब से अगर अपन गिने तो या तो एक साइड से 0 हो सकता है. 1 2 3 4 5 6 7 8 टोटल 10 है. आई थिंक 10 डिजिट्स होंगे एंड अपन को वो उधर ऐड करना है. तो अगर 11 है एंड उस पर जो फ़ोटो लगा हुआ है, अगर मैं 0 यहाँ से पकड़ूँ तो वो 3 है, वहाँ से पकड़ूँगा तो वो 1 2 0 1 2 3 4 5 6 7 है. सो 14 के साथ अपन को चाहिए रहेगा. पहले अगर अपन यहाँ से 0 पकड़ते हैं तो 14 के साथ अपन को चाहिए रहेगा 3. कितना है 21 के लिए? और कितना चाहिए? 6 7 चाहिए. तो 7 का डायग्राम 1 2 3 नहीं 0 1 2 3 4 5 6 7. ये जो भी चीज़ है यहाँ से स्पाइडर के ऊपर जो चीज़ है, तो उसको अगर मैं यहाँ पे बट लिमिटेड डायग्राम्स है. अगर लेकिन वहाँ पे अपन एक ही चीज़ कर सकते हैं ना. यहाँ पे 2 मिसिंग है एंड एट द मोमेंट यहाँ पे बस एक सिंगल
क्या कहते हैं, एक सिंगल क्वेश्चन मार्क है बस यहाँ पे। यहाँ पे भी एक लॉक डोर है, आई गेस इसके अंदर वो दूसरा वाला होगा, बाद में देखते हैं, बट मुझे लग रहा है वो नंबर्स का ही है कुछ रिलेटेड। यहाँ पे भी फास्ट ट्रैवल लोकेशन नहीं है क्या? Revelio. और फास्ट ट्रैवल लोकेशन बाहर है। ओके, देयर वी गो। डायनासोर? इनके ज़माने में थे क्या डायनासोर, मतलब ये मैजिक वर्ल्ड में? Revelio. रिवेलियर पूरा स्पैम करना पड़ेगा हर जगह पे जहाँ पे भी अपन जा रहे हैं। ओ ये लाइक चेक I've पॉइंट, always नाइस। said that travel broadens the mind. ओके, देयर वी गो। पहला क्वेस्ट आज का। Is that all you've got? Professor Hecat! Perhaps you'd be good enough to blast each other to pieces on your own time. I get new students every year, but I only have one Hebridean black skull. It was a token from the Great Poacher Raid of 1878. No doubt you've heard of it. Now, you may be asking yourself how an old woman like me single-handedly took out the largest poacher ring in eastern Wales and lived to boast about it. Knowledge. To the wise, age matters very little. Today we will review a spell that has saved me from death at the hands of dark wizards more times than I care to remember. Levioso. Levioso? A levitation charm? Levioso! A surprised opponent is a weak opponent. Care to defend yourself, Master Pruitt? No? One thing I've learned as an unspeakable is the value of simplicity, especially in the heat of battle. Now, let's practice what we've just learned, starting with something small. लेवियोसा जो था। अच्छा, ये जो पोचर्स वगैरह के बारे में बोल रहा है, तुम्हें अगर याद हो तो ये जो गेम है ये ज़्यादा क्लोज रहेगा अपने उसके फंटेस्टिक बीस्ट जो यूनिवर्स है, हैरी पॉटर यूनिवर्स की जो मूवीज़ है, एंड उसमें ऑब्वियसली जो मैजिकल बीस्ट है उस पर ज़्यादा एम्फेसाइज किया गया है। तो उस हिसाब से अपन को ये गेम के मतलब ये टाइम पीरियड में ज़्यादा मैजिकल बीस्ट या एनिमल्स दिखने चाहिए एज़ कम्पेयर टू हैरी पॉटर की जो मूवीज़ थी। स्टडी द वैंड, अच्छा ये तो अपन ने किया था पहले, वही रहेगा सेम। देयर वी गो। आई थिंक सेकंड स्पेल पहले अपन को एक लूमिनोस कुछ ऐसा करके मिला था। ये सीन मुझे याद है, मूवी में रॉन जो उड़ाने की कोशिश करता है ये। Now, let's try something a little larger. Let us begin with a basic cast. See how the dummy deflected your cast? This time, cast Levioso first, then the basic cast. Remember, a surprised opponent. Good. Now, well done. Oh, nice. Very good. But the best way to practice is by dueling. We'll start with you two. Duelists, take your marks. Time for a proper Hogwarts welcome. Now, I want a fair duel, using only Levioso, basic cast, and Protego. You may begin. Protego अपना protecting cast है शायद। This should be easy. Protego! Stupid Protego! Complicates things. Levioso! This can't be your first duel.
Let's just say I do enjoy life with you. First of all, my students, watch your opponents for signs to attack or defend उसको yourself. टेबल के बाहर ही भेज दिया अपन ने. Not bad for a beginner. You give as good as you get. I put you on the spot, and you rose to the challenge. Points to Ravenclaw. Thank you, Professor Heckert. Glad to have the opportunity to practice. If what I've seen today is any indication, we can expect great things from you. I demand excellence from my students. They are capable of achieving it, and they must achieve it. A classroom duel is one thing, but battling dark wizards, or as ever more likely, goblins, is a different kettle of Grindylows entirely. Understood, Professor. So, I'd advise you to keep practicing whenever you can. Perhaps Mr. Sallow will have some ideas for you. Again, well done today. I shall reach out soon with additional assignments. Okay, nice. All right. That's enough spectacle for one day. Class is dismissed. अच्छा, ये ताला खोलने का कोई स्पेल था. अलोमोरा. अपन मैं तो हिंदी वाला बोल रहा हूँ, मुझे इंग्लिश वाला याद नहीं है. पुरानी मूवीज मैंने इंग्लिश में हिंदी में ही देखी थी. हैरी Nice पॉटर. work. I enjoyed that. Well, that duel was quite something. Everyone will be talking about it. It was certainly good practice. Practice? It felt more like I was dueling an expert. Sebastian Sallow, by the way. Didn't expect a new student to be so deft with a wand. Then again, perhaps this wasn't your first duel. I have had my share of wand combat. It was never used my. I've dueled enough. Consider yourself lucky I held back. Huh, fair enough. You owe me an honest duel when you aren't. You know, you might be a perfect fit for a certain exclusive, unsanctioned dueling organization. बेसिकली जैसे अंडरग्राउंड फाइटिंग हब्स होते हैं ना वर्ल्ड, दूसरे वर्ल्ड्स में, वैसे ये आई गेस अंडरग्राउंड ड्यूलिंग ऑर्गेनाइजेशन है. ये अनसैंक्शन्ड ड्यूलिंग ऑर्गेनाइजेशन. Exclusive and unsanctioned. Count me in. Excellent. Knew I was right about you. If you want to get the most out of your time at Hogwarts, you're going to need to break the rules now and then. Whether it's joining a secret dueling club, or sneaking into the restricted section of the library, you just have to be clever enough not to get caught. Thank you, Sebastian. I'll keep that in mind. Good. Pleasure chatting with you. टीचर पीछे I'm sure खड़े I'll लेके see you सुन रही है soon. सब. Perhaps somewhere unsanctioned? We'll see if your performance today was sheer luck or actual skill. Look for Luke and Brattleby near the clock tower entrance, if you're interested. Okay, Till I next guess time. side mission मिला अपन को, but yeah, defense against. Okay. Oh, level 2. एक सेकेंड, अपन ने अभी ये क्वेस्ट कंप्लीट किया तो कुछ मिलेगा क्या? ओके, चार्म्स क्लास तो ट्रैक कर रहे हैं अपन. Side quests are now available. Available side quest. अच्छा, diamond ship में can be found inside the region of Hogwarts marked as अच्छा black flag and discover by exploring the world. Gather XP but do not advance the main story. अच्छा, XP के लिए तो करना ही पड़ेगा. Challenges. अच्छा, ये वाला रहा. Okay, nice. This item has no magical effect. Lol. Change appearance. Oh, ये वो डीलक्स एडिशन का पोर्ट है. नाइस.
और किस किस के अपने पास? ओके, देयर वी गो, मैचिंग मैचिंग, बढ़िया। अच्छा, ये अपन को एकदम सबसे फर्स्ट वाली चीज से मिली थी आज के एपिसोड के स्टार्ट में। ये अच्छा नहीं लग रहा है, ये उतार देते हैं। दिस आइटम हैज नो मैजिकल प्रॉपर्टीज। आई गेस अपन को आगे जाके मैजिकल प्रॉपर्टीज वाले आइटम मिलेंगे। डू वी हैव हैट्स? या वी डू हैव हैट्स। तुम पहन के भी हाइड कर सकते हो हैट्स को। तो ये वाले हैट्स मुझे याद है कुछ कैरेक्टर्स पहनते थे मूवी में। वी डोंट नीड अ हैट एट ऑल। बाल इतने अच्छे बनाए, हैट की जरूरत ही नहीं है। ओके, बाकी चीजें लॉक्ड है। आई गेस ये फ्लाइंग माउंट, ब्रूम एंड वैंड हैंडल्स। अच्छा, अपन को अपना वैंड भी तो नहीं मिला है, उसके लिए हॉग्समीड जाना पड़ेगा। There we go. अपना कैरेक्टर ऑलरेडी बढ़िया लग रहा है। ये किधर और ऊपर जाना है? How nice to see you, my young friend. I wonder if it's even कितने फ्लोर से इधर? अच्छा, इसमें वो रूम है क्या जहाँ पे स्टेयर्स चेंज होते? होना चाहिए यार गेम में, वो तो एकदम आइकॉनिक रूम था। आई गेस होना चाहिए गेम में। व्हाट इज दिस? मुझे लगा एक मैजिकल कैट होगा। Revelio. चार्म्स क्लास है ना? यस, चार्म्स क्लास है ये। Professor Ronan tends to go on a bit. We sometimes have to remind him to finish the lesson. I thought potions Some of were us don't necessarily want him to get back. यही ढूंढ रहा था। handy resource indeed, the your werewolves field doing the guide. goblins and the Goblins, upright. werewolves, where were you? In the Goblin Rebellion of And 1752? by the end of it, the Minister for Magic was Albert Boot. No, it wasn't. Oh, what fun! I won't say my goodbyes. I shall Rebellion. cheer for the boy who says you're telling I'm not lies. telling lies, Peeves. It was Albert Boot. No, it wasn't. It was Basil Flack. Oh, fight, fight! It's a bold टीचर है attack. क्या वो जो उड़ रहा है? Boot or the Minister of Flack. Anyways, let's get our next magic spell. Here, behind you. There is an open seat here. Thank you. Hello, I am Nettie. So you are the new student. Have you met Professor Ronan yet? Shall we begin? Welcome to Year 5 of Charms. Now, this will be a crucial year in your education on the art of charm work. But I am confident that we will take hold with the passion and rigor requisite of such a challenge. Right, now, everyone, please open your textbooks to page 517. But before we begin, can anyone here tell me the difference between the incantations of the color change and growth charms? Anyone? Anyone? I am afraid it is too late to study now. My, the summer months must have really taken a toll on you all. By the looks of it, you all spent your holidays practicing Obliviate on one another. Do you even remember how to perform a basic summoning charm? किसी को कुछ नहीं पता। Well, it seems that we are in dire need of review.
everyone get into pairs and take positions on opposite sides of the classroom. Now let's put those textbooks to use as the blunt objects you so believe they are, and take turns summoning them out of one another's hands. Only one book will be needed per partnership, Miss Dale. Thank you. Get into place now. Accio. Accio. Oh, nice. Acha. That is not bad. You are a swift learner. I see a lot of potential, but remember, potential is nothing without practice. Keep at it. You might just rival Miss Onai here. Very good, everyone. That's enough of that. Well, as you all seem to have the basics down, and it is an exceptionally lovely day, I was thinking that we might have ourselves a little excursion outside for a spot of fresh air. After me. खत्म नहीं हुआ है, कुछ और बचा है अभी. I've always found that fun goes hand in hand with mastery, as I'm sure the Quidditch players amongst us would agree. So, what better than a bit of sport to put our prowess with the summoning charm to the test, right? So why don't we have our newest student start us off? क्या करना है? Very simply, cast Accio on one of the spheres and relinquish your charm at the last possible moment. Accio, think of this like Very good. Oh, nice. Maximum point मिल गया. That's it. There we go. Excellent control there. Perfect score. Very good. Points to Ravenclaw. But there's certainly no sport in playing without some friendly competition. Miss Onai, would you care to give our new student a bit of a challenge? Come on up. You'll be the blues, just as before, and Miss Onai, you are playing red. Clear? Yes, sir. Okay. तो अब चैलेंजिंग हो सकता है. अपन को अपने अपोनेंट के बॉल को हिट नहीं करना है. There we go. Accio. Splendid! Here we go. पर अपोनेंट के बॉल को बाहर गिरा सकते हैं क्या? Nicely done. थोड़ा और तेज खींचना था. That is how it's done.
ओके, ये फाइनल वाला थोड़ा टफ होने वाला है क्योंकि अगर मैंने स्ट्रेट उसे खींचा ना तो इसका बॉल आई गेस ब्लू में आ गया, तो इसे 50 पॉइंट मिल जाएंगे Not वहां से। exactly your typical lesson, is it? बस 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 बस, there we go. Nice. A perfect score. Remarkable. Sumner Court winner. Okay. Let us make this a bit more interesting, shall we? और खेलना है? I think we are well past interesting at this point. I'll say. Enough chatter. Focus now. You will need it. This round settles it all. Let us see this. Concentrate, Natsai. नहीं 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 नहीं, वो बच गया। ओह, Very good. हल्का सा अगर थोड़ा और पकड़ के रखता ना, बाहर गिरता ये बॉल। Nice. Well done. Be sharp. Phew. Accio. अरे नहीं, I guess we won. Yep. उसका एक बॉल पूरा मिस हो गया ना। Very good, both of you. Well done. I guess वापस क्लास जा रहे हैं अपन। Class is dismissed. Gather your things on the way out. Good game back there. I must admit, I think I underestimated you. Took me weeks to become proficient with Accio. Took weeks for me to get anything right when I transferred here. It gets easier, I promise. Thank you, but I've been holding my own. I appreciate your confidence. I transferred here from Wagadu just before my 4th year. My mother received an offer to teach divination here. Before I knew it, we had left Uganda and were halfway around the world at a new school in a new country. This may seem an odd question, but is magic the same there as it is here? Mostly, yes. But I did have to learn how to use a wand when I arrived here. Hardly anyone at Wagadu uses one. You can cast spells without a wand? Oh, yes. I find wandless magic to be much more instinctive. Not to mention quite convenient if one is without their wand. I must admit, however, that I am growing quite fond of using a wand. It seems very dramatic. बिना वॉन्ड के भी मैजिक कर सकते हैं, मुझे नहीं पता था हैरी पॉटर वर्ल्ड में ऐसा कुछ था। मतलब ऑब्वियसली गॉब्लिन वगैरह करते हुए अपन ने देखा है, बट आई डिडंट नो कि विज़र्ड्स भी कर सकते हैं। It's nice to learn about another wizarding school. Thank you for asking. I do miss Wagadu, but I am glad to be here at Hogwarts. Ah, I think Professor Ronan wants to talk to you. Better not keep him waiting. Until next time. दूसरे विजिटिंग स्कूल्स भी है, अपन ने मूवी में भी देख रखे दो। Can use Accio. A word, if you would. If you're so inclined. You wanted to speak with me, Professor? I did. I trust your first charms lesson lived up to expectation? Well,
An outdoor competition wasn't exactly the lesson I was expecting, sir. What charm is there in the expected? You did well, managing to best as gifted a student as Miss Onai. Thank you, Professor. I enjoyed the match. Miss Onai is always a fierce competitor, though I sense that she is a bit distracted of late. Now, Professor Weasley has asked that your professors give you instruction outside of the ordinary curriculum. Expect to hear from me soon regarding a special assignment that I am preparing for you. Yeah, I guess teachers अपन को दूसरे side course देंगे जो उनके special assignment रहेंगे. So challenges में था क्या? हाँ, challenges में था. क्लोक मिला नहीं, मिला नहीं है शायद, पता नहीं मैं सेलेक्ट क्यों नहीं कर पा रहा हूँ. कंप्लीट 4, अच्छा 1 out of 4 है. कंप्लीट 4 मेन स्टोरी क्वेस्ट तब क्लोक मिलेगा. चश्मा भी मिला नहीं. वो चश्मा जो पड़ा था अपनी इन्वेंटरी में वो कोई दूसरा था. ओके कूल. सो व्हाट नाउ? मैप पे देखें अगला मेन मिशन क्या है. सो वी हैव 2 साइड मिशंस. I should speak to Lucan Battleby about the secret dueling club. And what is this? Like a moth to a frame. Lenora appears to be looking for a clue. Perhaps I can help her investigate. Okay. इसमें क्या है? ये वाला साइड मिशन अपन कर सकते हैं. कोई मेन मिशन अपीयर क्यों नहीं हो रहा है? बट मुझे वो नहीं समझ रहा है. एक सेकेंड, थोड़ा सा इधर उधर मूव करके देखते हैं. Hello. How was your first day coming along? Hello, Samantha. Nice to see you again. I wondered how your first day was going. You certainly seem to hold your own in charms. I've been fortunate. Beginner's luck. My brother William would tell you not to be so humble and to trust your abilities. Then again, he tends to be overconfident in his. Well, better see to my charms homework. I'm afraid I can't count on beginner's luck to impress Professor Ronan. New quest available. Okay. ये क्या चीज है? कलेक्शन. अच्छा कॉस्मेटिक्स है वो. भाई इसकी ये जो चीज़ है ना काफ़ी सारे हैं यहाँ पे करने के लिए. Weasley after class. Professor Weasley wants to see me. अच्छा ठीक है. आई गेस अपन नेक्स्ट एपिसोड में करेंगे वो, क्योंकि आज का एपिसोड ऑलरेडी बड़ा हो चुका है. एक सेकेंड, ये जो पेपर उठ रहा है. ओह अच्छा, यही चीज़ों को इकट्ठा करना था. ठीक है. कलेक्ट फील्ड गाइड पेजेस हॉगवर्ट्स. Revelio. Oh, I remember that day. Yes, in Greenhouse 3. Yeah. The bucket of leaping toadstools over the far गोल्ड मिला अपन को. Yes, I do recall now. And Professor Garlic knocked it over and we ran out. जस्ट थोड़ा सा रैंडम एक्सप्लोर कर रहा हूँ मैं. What is this? Accio. Levioso. और लेवियोसो वर्क कर गया. ये कितना किधर तक जाता है ये रास्ता? वो ये क्या कॉन्स्टिट्यूशन बना हुआ है? भाई ये क्या बना हुआ है यहाँ पे? A ghost.
जैसे भूत भी थे हैरी पॉटर में हैं। What are you up to now? ओ आई गेस ये एस्ट्रोनॉमी क्लास है, अभी खुला नहीं है ये। पहुंच गए ये टेरेस पे अपन। ओ भाई कितना बड़ा है ये स्कूल, खत्म ही नहीं हो रहा है। एक सेकेंड, आई गॉट अ चेस्ट। रिलैक्स जंपर यूनिफॉर्म। एक सेकेंड, हंसने की आवाज किसकी आई थी इधर? मुझे पहले लगा वो बच्चों की आवाज है जो नीचे बैठे हैं। कैन यू यूज द टेलीस्कोप? नो वी कांट। आउल बैठा है किसी का यहाँ पे। व्यू काफी सही है यहाँ से। और ऊपर चलते हैं। यहाँ पे कोई बंदा है। Revelio. Astronomy telescope guide. This telescope is the finest steering instrument of its kind. Okay, perfect for viewing the moon and the stars and anything else one might find in the night sky. Nice. I guess अपन रात को में भी ये टेलीस्कोप यूज कर सकते हो। काफी मजा आने वाला है ये पूरा एक्सप्लोर करने में। देख रहे हो वो देखो, क्विडिच ग्राउंड बना तो रखा है बट क्विडिच इन्होंने गेम में डाला नहीं है। मुझे लग रहा है ये लोग ऐसे डीएलसी कुछ बाद में ऐड करेंगे गेम में, क्योंकि क्विडिच काफ़ी फन होता है। मुझे याद है बहुत पहले एक गेम था क्विडिच का, जिसमें मतलब वो सिर्फ क्विडिच पे बेस्ड गेम था एंड मैंने वो खेला था काफ़ी बहुत पहले, मतलब अराउंड मुझे लग रहा है 6-7 साल हो गए होंगे। काफ़ी पुराना गेम था वो। तो क्विडिच काफ़ी फन होता है अगर इन्होंने सही से ही बनाया है ना। एनीवेज गाइस, एपिसोड अपन यहीं पे रैप अप करते हैं। अगले एपिसोड में सबसे पहले वीजली से, मिसेस वीजली से मिलने जाएंगे। आई गेस वो अपन को हॉग्समीड लेके जाएंगी, जहाँ पे अपन को अपना नया वॉन्ड एंड बाकी जो भी चीज़ है, पता नहीं अपन पेट्स वगैरह ले सकते क्या, क्योंकि अच्छा तुम्हें याद होगा फर्स्ट एपिसोड के स्टार्ट में वो चैरियट पे एक आउल बैठा हुआ था। आई थॉट कि वो अपना पेट है, बट मे भी हो सकता है वो प्रोफेसर फिग या फिर वो जो दूसरा बंदा था शायद जॉर्ज था जो मर गया था फर्स्ट एपिसोड में, उन दोनों में से किसी एक के साथ हो, तो वो अपना पेट नहीं था। आई गेस मे बी वी कैन बाय अ न्यू पेट। एनीवेज, सी यू गाइस इन द नेक्स्ट एपिसोड। आज का एपिसोड अच्छा लगा तो लाइक करना मत भूलिएगा। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।